Sharada Varada Sudha Om Deva Nambit Kavi Vishwarupini Deva Jagat Dayini Srishti Mai Pujini Angika Ambika Devi Darun Mukh Chandrika Lalat Rupini Pakshidharini Mandrika Shyamarupa Bhadrarupa Kalirupa Chandirupa Dehirupa Devirupa Shabdarupa Jnanarupa Adirupa Indrani Rupa Rudrani Rupa Sarani Rupa Om Namo Devi Shambhavi Namaha So we bow down at the pristine feet of the Holy Mother, the Divine Mother, who is within all of us, above all of us, with all of us, around all of us, whose creation we are living in, with whose energy we are breathing every breath, living every ounce of every life, due to which we know what we know as life, what we call as life. We know life because of this. If this Srishti, if this creation would not have been there, then definitely we would not have known life in the way we know it today, isn't it? So the Devis, Prachanda Rupa, Saumya Rupa, Srishti Rupa, Adi Rupa, Chandi Rupa, Kali Rupa, Neha Rupa, Sneha Rupa, Matri Rupa, Bhaja Rupa, Prema Rupa, Datid Rupa, Devadatri Rupa, Srishti Datri Rupa, Jagaddatri Rupa. She holds this creation just like a mother, who keeps a child in her womb for 9 months in the same way. She keeps this entire universe in her womb. That is why it is known as Hiraṇyagarbha. So the Garbha can only be of the Devi, isn't it? It cannot be of someone else. So who is Hiraṇyagarbha? The Devi is Hiraṇyagarbha, the golden womb, or the grand womb, or the great womb, out of which all of us have manifested. Just like we have manifested in this human body out of our mother's body, isn't it? We all have come out of that body made a body, isn't it? Our mother ate a few things and it became us. She ate more and it became us. Happened like that way, isn't it? That is why it is always said that mothers must eat more. Keep eating, keep drinking. That is why it is always recommended. If you go to a typical Indian household,
And if there is a lady who is pregnant, then there is a lot of focus. Ideally, it used to be once upon a time, definitely. We don't know how it has been in this particular era. In the last 500 years or 1000 years, how it has been, we don't know about that. But once upon a time, in this culture, in this land, it is still there. In India, the place of a pregnant lady is far more and far higher than most other people. Everybody has to make space as a pregnant lady walks in, because she needs to sit down first. Because it's not one life, it's 2 lives. And who knows, it could be 3, right? As well, sometimes twins are born. So that is an even bigger manifestation, or even an even bigger creation. So that is Matri Rupa, Srishti Rupa. That is the Garbha, isn't it? The Garbha is never in the male, it is always in the female, the feminine energy. So the mother, the divine mother, just like we all are so close to the mother. Why? Because we were born out of her body. We definitely love our father, there is no doubt. The father is also very, very dear and very clear. Even a father is very crystal clear. The father is also caring, the father also cares, and the father also dares. The father also bears, isn't it? The father is willing to bear his entire bank balance. The father is willing to dare risk his life. The father is willing to do a lot of things for the children. But the mother is an altogether different ball game. Comparisons should not be made, but mother is mother. So this thing is just being said to explain the importance, the significance of the feminine aspect of the energy, because many of us were told, or were being told once upon a time, that the feminine is lesser and the male is superior, or something like that, some rubbish like that, isn't it? And that is pure rubbish. And the truth needs to be told, isn't it? So this is the truth. Now whether you like it or you don't like it is different, but this is the fact. So the mother is very important. So the place of the divine mother in the gospel of truth is there. That place is there, reserved. Observe the silence of the night. That is one thing. Of course, the truth is even ascend all these things, but this is also part of the truth. Hiraṇyagarbha. So she is that one. So that is the feminine aspect. And then there is the masculine aspect. So these 2 aspects are there. You cannot say that this is not there. Masculine and feminine are not there. They are there. And what is the ratio of their importance? There is no such ratio. We can say they are equally important, but there is no question of any ratio. There is no 50-50 in it. They are 0, 100 and 100, 0. It's like that. If you ask the mother, she will say, father is 100% important. I'm just a 0. If you ask the father, he will say, mother is 100% important. I'm just a 0. If you go to the mother, it's all mother. अगर आप माँ के पास जाते हो तो बस माँ ही माँ है. अगर आप देवी माँ के चरणों में जाते हो तो माँ ही माँ है. माँ के चरणों में आप इतना, उनकी भक्ति में इतना दम है, उनकी भक्ति में आप इतने ओतप्रोत हो जाओगे, इतने लीन हो जाओगे, इतने तल्लीन हो जाओगे कि उसके अलावा आपको कुछ सूझेगा नहीं. ये प्रभाव है, ये स्थिति है, ये एक तल्लीनता की स्थिति है, ये एक अद्भुत आनंद की स्थिति है, अभूतपूर्व आनंद की स्थिति है, परमानंद की स्थिति है, परब्रह्म की स्थिति, पराब्राह्मणी की स्थिति है. उतना ही आनंद है जितना परब्रह्म में है, वही आनंद
महाश्वेता रूपा, महाश्वेतांबरी दिगांबरी, महाजगत जननी, कृपालु जननी, नेह जननी, प्रिय जननी, शांति देवी, शांति दूता, भक्ति रूपा, प्रेम स्नेह स्वरूपा, सुता माता, देवी कृपा, देही शक्ति रूपा, जगत जननी, जगत सम्राज्ञी, महाराज्ञी, महापुण्य प्रतापी, महापुंज प्रकाशिनी, महाज्योति विरागिनी, महादेवी स्वरूपिणी, महाकाल कुंजनी, महाकाल कुंडिनी, महाकुंड महाकुलस्व धारिणी, कुंड कृपा, कुंज कृपा, श्वेत कृपा, भू कृपा, भूवस्व कृपा, स्वकृपा, महा भूमि कृपा, महाभूत कृपा, महाभव राज्ञ कृपा, महापर राज्ञ कृपा, महाजन राज्ञ कृपा, महाआराध्य कृपा, महाराधानुराधे कृपा, मां शाक्तये कृपा, मां जगत जननी जगदम्बे कृपा, परा ब्राह्मणी, परा श्वेतांबरी, परा भूस्वरूपिणी, महाराज्ञी, महाजगत जननी, महाकाली, महाकुंज स्वरूपिणी, कालकुंडिनी, नेह सर्पिणी, देहदायिनी, सृष्टिदायिनी, जगदवाचिनी, मुखरवाचिनी, स्वरवाचिनी, शब्द वाहिनी, रथकारिणी। तो ये मां जहां आती है, मां की कृपा जहां आती है वहां भक्ति स्वतः आ जाती है। मां की दृष्टि जैसे ही तुम पर पड़ती है भक्ति स्वतः तुम में आ जाती है। या यूं कहें कि तुम जैसे ही मां के चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ जाते हो तो मां का सौम्य स्वरूप तुम्हारे सामने प्रकट हो जाता है। तुम जैसे जिस भाव के साथ मां के सामने जाओगे मां उसी भाव में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। मां का भाव इतना सुंदर है कि उसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। हां, उसका अनुभव अवश्य किया जा सकता है। उसके गुणगान में स्रोत अवश्य लिखे जा सकते हैं। काव्य महाकाव्य जरूर रचे जा सकते हैं। मैं गया था मां अरुंधति की गुफा में। मुझे लगा मां ही मां है। मां ने तो मैं वहां गया था कैलाश पर कुछ बोलने और थोड़ा अच्छा समय व्यतीत करने, पर मैंने जैसे ही वहां ध्यान लगाया मां ने जैसे अपना मुझे चारों ओर से मां की ऊर्जा ने जैसे घेर लिया। ऐसा लगा जैसे मां ने अपना चरण ही मेरे ऊपर पगाड़ दिया। मां के गुणगान में जितने भी शब्द लिखे जाए, जितने भी स्तोत्र रचे जाए, जितने भी काव्य रचे जाए उतने ही कम है। मां की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मां की कृपा का गुणगान, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। कोई भी पुत्र अपनी मां के बारे में नहीं बता सकता वो अपनी मां से कितना प्रेम कर सकता है। शायद ये वो खुद से भी नहीं बताना चाहता, क्योंकि बताने लगेगा तो रो देगा। रामकृष्ण परमहंस के साथ ऐसे ही हुआ था। बिना वजह रोते रहते थे, मां की भक्ति में रोते थे।
भक्ति कब प्रेम में बदल गई पता ही नहीं चला। भक्ति और प्रेम में क्या भिन्नता है? कोई भी भिन्नता नहीं है। प्रेम ही भक्ति है, भक्ति ही प्रेम है। सिर्फ सच्ची भक्ति होती है वो प्रेम है, वो सच्चा प्रेम है, निष्पाप, निष्कलंक, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध। पूर्णिमा के चांद में भी एक दाग होता है, लेकिन इस प्रेम में कोई दाग नहीं होता, इसमें कोई बाधा नहीं होती, इसमें कोई विकार नहीं होता, इसमें कोई विचार नहीं होता, इसके बारे में कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। परंतु हाँ, तुम जरूर पूछोगे कि बोलने की क्या जरूरत है इतनी ज्यादा? बाबूजी कुछ दे सकते हो तो दे दो, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई यंत्र, कोई राग, कुछ भी, कोई श्लोक, कुछ तो होगा। देखिए, मां का चित्र होता है, मां का स्वरूप होता है। स्वरूप आप कहीं से भी लाते हो या खुद से बनवाते हो या खुद ही बनाते हो, वो आप पर है। आप इसे कहीं से खरीद के लाओ या कोई चित्र लेके आओ या बनवाओ या खुद ही बनाओ, सभी अच्छे हैं अपनी जगह। और आपने उसे अपने पूजा गृह में, शुद्ध स्थान में, जहां पूजा होती है, जो आपके मंदिर का स्थान है, जो आपके आराध्य का स्थान है, वहां आपने उन्हें रख दिया और बस आप मां के सामने बैठ गए। आसन होना चाहिए, मां का आसन थोड़ी ऊंची लगनी चाहिए चौकी पे, आपका आसन थोड़ा नीचे लगना चाहिए, साधारण सा आसन होना चाहिए। मां को कोई सोने की चौकी तो चाहिए नहीं, आप मां को जिस पर भी रख दोगे वो खुशी रहेंगी। Whatever resources you have right now are always sufficient. If you want, you can worship the mother goddess even in a piece of rock. आप उसमें भी अगर एक पत्थर, आप गोल पत्थर लेते हो और उस पर मिट्टी से मां लिख देते हो, मां आ और ऊपर अंग, मां, अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, या आपने कोई बीज मंत्र लिख दिया, जैसे कि श्रीम हो गया, ह्रीम हो गया, कुछ भी है ना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चै नमः, ऐसा कुछ लिख दिया। थोड़ा बड़ा हो गया, इससे छोटा भी लिख सकते हैं, सिर्फ श्रीम भी लिख सकते हैं। इस तरह से लिख के उसे रख दिया, बस वही काफी है। जितने बड़े बड़े भक्त हुए ना, उनके पास सिर्फ यही था दरअसल। They didn't have the kind of resources that अच्छे बड़े कहते ना कि बड़ी चीजें बनवाई और मुख्य चीज पर ध्यान नहीं दे पाए, है ना। मुख्य चीज होता है, मुख्य चीज क्या होता है? मुख्य चीज यही होती है टू आइडेंटिफाई, इस बात को पहचानना कि एक गोल पत्थर है, ये थोड़ा सा त्रिकोणीय पत्थर है, उसको भी आप ले सकते हैं और उस पर आपने मां लिख दिया। और जो आप लिख रहे हैं ना, उसमें प्रेम होना चाहिए, उसमें भक्ति होनी चाहिए मां के लिए, तो काम हो जाएगा, तो काम शुरू हो जाएगा। काम हो नहीं जाएगा, काम शुरू होगा। इस चीज को मानना कि मुझे मां को, इन कहते हैं कि मां आपके दान दक्षिणा और 100 पात्र और महंगा चावल और महंगी साड़ियां देखकर नहीं आने वाली है, और महंगे आभूषण और सोना चांदी देखकर नहीं आती है, वो तो एक गरीब की कुटिया में भी आ जाती है। ज्यादातर जो साधु हुए, ऋषि हुए, मुनि हुए, वो तो कुटिया में ही रहते थे, झोपड़ी में रहते थे। उन्हें मां ने क्यों दर्शन दिए? बड़े बड़े राजा महाराजाओं को नहीं दिए, उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए, पर मां यहाँ आ गई। कारण एक तो
समय दे रहे हैं। ऊपर से तो इन्वेस्टमेंट है, राइट इन्वेस्टमेंट है और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो तरीका है उस तरीके से कर रहे हैं, जो सिद्धांत है उस सिद्धांत से कर रहे हैं, सिद्धांत से भटक कर नहीं कि जब मन आया तब कर दिया या बस फॉर्मेलिटी के लिए कर लिया कि रोज सुबह कर लिया, रोज शाम कर लिया। जब आप कर रहे हैं तब आपके भाव कैसे हैं, ये बहुत जरूरी है। तब आपका ध्यान घड़ी पर नहीं जाना चाहिए। घड़ी पर जिसका ध्यान चला जाता है वो कभी भक्ति नहीं कर सकता। वो दरअसल भक्त है ही नहीं, वो दरअसल पुजारी भी नहीं है। पुजारी समय देखकर पूजा नहीं करता, पुजारी तो पूजा में मग्न हो जाता है, वो उसे पूजता है। बाकी चीजें उसके लिए महत्व ही नहीं रखती। जब आप किसी चीज को पूजते हो तो उस समय बाकी चीजें आपके लिए महत्व ही नहीं रखती। आपका खाना, आपका पीना, आपका कोई भी काम आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही कार्य है। तभी तो आपने इस कार्य को चुना है, आपने तभी तो इन्हें इष्ट बनाया। इष्ट का मतलब ही होता है कि जिसे आप ईश्वर मानते हैं। जो ईश्वर होता है उससे बढ़कर कौन होता है? तो श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, प्रेम, ये बहुत आवश्यक है। और इसके लिए अगर आपको माँ के बारे में जानना है, जो चीज आप शायद नहीं देख पा रहे हो, उस चीज को अगर आपको देखना है तो आप इसके दर्शन को सुनो। और इसके दर्शन को बताने के लिए मैंने ये श्रृंखला प्रारंभ की है। मैं आपको, ये श्रृंखला आएगी, इसमें मैं आपको माँ के भी बारे में बताऊंगा और माँ के भिन्न भिन्न स्वरूपों के भी बारे में बताऊंगा। जैसे कि माँ त्रिपुर सुंदरी हुई, माँ छिन्नमस्तिके हुई, सभी कुछ बताऊंगा। लेकिन मूलतः मुख्यतः देवी माँ है, जिन्हें शक्ति भी कहते हैं। उन्हीं के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं, बट एट द कोर शी इज वन ओनली। वो एक ही है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। एंड शी इज द फेमिनिन एस्पेक्ट of that one. That one has got two aspects, a masculine and feminine. One that is called energy, from which matter is born, and the other which is the vast void, from where the energy merges into. Each element gets created from the other elements. So slowly we come down to the earth element. The earth element is the last element to get created, and then the 5 elements together. But all the way, all of this is happening. The creation of element itself happens with the help of energy, and that energy, it is all the decision, the desire is of the void. It comes from the void. So the void and the energy, so the Shiva and the Shakti together. And finally, they're always together. They, in a way, to be honest, they never get separated. So the void is even right now, the void is still there inside you. The Shiva Tattva is still there inside you in its seed form. It's not that it is not there. It's there, but it is in its seed form. And you're not able to see it, you're not able to live it, you're not able to observe it, you're not able to be in it. You don't need to observe it, you have to be in it. You become it. That is the fact. That is the fact. That is how it happens. That is the practical thing. You cannot stand somewhere and see it from a distance. If you start even observing your breath, after a point of time, you cannot observe your breath. You will be like the breath itself. You won't be able to observe the breath. After some time, breath will be like,
slowly disappearing also. It will slow down so much that it will kind of disappear. You won't be able to observe it also. You will slip into a different world. So a new journey begins. As you go deeper and deeper, you start, going through experiences like astral travel and all. But when you go even deeper and deeper and deeper and deeper and deeper and deeper, then you come to the world of the land of realization, where you get to experience complete silence. And that is called, Nirvikara. And then, of course, then you can also get immersed in bhakti. And so sometimes you can get, so there is bhakti also, there is this vast void also, both are there, both keep happening in life. You can enjoy both the nirguna and the saguna. Bhakti is saguna only till a certain point. Then it leads to nirguna. Nirguna leads back to saguna. It happens like that. It's a very beautiful state to be in. I will tell you things more clearly in the coming days. How it all happens, I will tell you. So I will try to throw light over what happens. And that will actually be my attempt to motivate you to start the practice, and then I will tell you about what to do. That is the practice. On the parallel, I will start giving you some videos and audios about some basic practices so that you can keep doing those practices initially to, fix a little bit of yourself up so that when the time comes for those practices, you're fully ready, you're fully on, fully charged up. So my dear friends, all I would like to say at the end of the session is that I think enough has happened around us in this world. And that is why I'm giving this message to all of you. Otherwise I may not have. But I think, given the situation, I think right now everybody in this world, I think, has reason enough to believe that these things are true, because otherwise earlier people used to share their experiences, people used to share practices, but nobody got interested, or very few people got interested. But now I think everybody has got reason enough to believe that truth is there. And I think right now even I am motivated enough to share this with all of you. And I'm coming to all of you with spotless love. I'm bowing down to all of you with spotless love. I'm bowing down at the doors of my Divine Mother with love. I hope it is spotless. Mother will decide. Mother will decide yours as well. We will come back with more sharings very soon. I'm sure all of you, superb. I'm very proud. I must tell you one thing. I'm very, very proud of each one of you. I really believe this is destined for all of you, to touch, to become the truth, to live in the truth. I think this is destined. I think the time for all of you to start living in bliss and truth has come. I think the time for all of you has come.